Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. But so you can see this right now. We have a question over here. The question is saying that we have potassium chlorate. The formula is given KClO3 decomposes to form potassium chloride and oxygen. And the equation is also given to us, right? And the question is calculate the percentage by mass of oxygen in potassium chlorate. ओके सो ये अभी तक हमने वैसे किया नहीं है बच्चों, मतलब कि अभी तक आपको मैंने ये बात सिखाई नहीं है ये कैसे करना चाहिए, बट इट्स क्वाइट सिंपल. वी कैन सॉल्व दिस इजीली. इफ यू वांट टू यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट बाय मॉलिक्यूलर मास. आप इसको मॉलिक्यूलर मास से सॉल्व कर सकते हो. जस्ट लुक एट ओवर हियर KClO3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस. पोटेशियम 39, Cl is 35.5, ऑक्सीजन is 16 into 3. बच्चों क्या आंसर आएगा जरा जल्दी से बताइए. 122.5. 122.5. Very good. Now the question is percentage by mass of oxygen in potassium chlorate. It means, bacho, we need to find out the percentage of oxygen. So we need to put the mass of oxygen in numerator. We need to keep the overall mass in denominator, and then we need to multiply it with 100. So just check it, bacho, kitni percentage aa rahi hai? 39.184. 39.184%. So this is the way to find out the percentage. You also did the same scenario or the same part in mass as well. So I think it would be very easy for you, right? But the thing 48 is, कहाँ से आया? 48 the mass of oxygen in the molecule. Okay. 3 oxygen. KClO3. Yes, KClO3. We have 3 oxygen. So the molecular mass in the oxygen in the molecule is 48, right? Okay. I thought it was like the product one. Oh no. O2. Right. कोई मसला नहीं है. चले next move on towards the next part, or this is what we have already done in the last few classes. Calculate the maximum volume of oxygen from at room temperature and pressure when 12.25 grams of potassium chlorate is completely combust. All right. So you can see this already decomposed. So we have mass. We can divide it by molecular mass to get the number of moles, right? So the mass is 12.25. Molecular mass is 122.5. तो बच्चों number of moles बता दीजिए जल्दी से. 0.1. बेहतरीन, जबरदस्त. ये हो गया पहला स्टेप. बच्चों सेकंड स्टेप में रिलेशन लगाना है. As we have the moles of KClO3 and we need to find out the volume of oxygen. So given and required, right? Relation according to the equation is 2:3. And what we want is the oxygen moles. So just check it बच्चों कितना आंसर आना चाहिए. मेरे ख्याल से 0.15 आना चाहिए. ऐसी है. Moles of oxygen is 0.15 moles. And if you talk about the volume, और वॉल्यूम हमें किस में फाइंड आउट करना है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में? इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर, राइट? सेंटीमीटर क्यूब या मेंशन नहीं है तो आप किसी में भी निकाल सकते हैं. सेंटीमीटर क्यूब में निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराऊं बच्चों? 24,000 से. वेरी गुड. क्या आंसर आया बताइए जल्दी से. 3600 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसी किया बच्चों सबने? जी सर. क्या मुश्किल चीज थी, आसान थी? जी सर. है मेरे एक स्टेप खा गई गलती से. कोई मसला नहीं है. एक स्टेप अगर आप खा गए तो अब नहीं खाएंगे नेक्स्ट स्टेप में. अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाला सॉल्व करें. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने में. तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है आपने. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ऊपर करेगा. ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को लगना चाहिए. आप सबने बहुत इफेक्टिवली माशाल्लाह से अब तक ये काम किया हुआ है पूरा, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए. आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. जल्दी से करो. So you can see this right now. We have a question over here. Aqueous hydrogen sulfide reacts with aqueous potassium hydroxide. What is the minimum volume of 0.1 mole per decimeter cube KOH required to react completely with a solution 0.10 gram of H2S? Now this is the thing. क्या कह रहे हो बेटे उमर? 2 मिनट और दे सकते हैं? क्या कह रहे हो? Can you give 2 more minutes? 2 more minutes. हाँ तुम कर लो, कोई मसला नहीं है. तुम देख लेना बाद में करने के बाद. ठीक है. सो बच्चों यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर कि ये जो वॉल्यूम है ये गैस का वॉल्यूम नहीं है. अगर ये बात आपने पहचान ली तो आप ये सवाल सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से. लेकिन आमतौर पर बच्चे ये बात समझते हैं कि ये गैस का वॉल्यूम कह रहा है और फौरन से ना वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू आपके पास वॉल्यूम ओवर 24 या 24,000 ना.
लेकिन आप देखें साथ में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ वाला वॉल्यूम, बस ये पहचानना है आपने. And then secondly, you have mass in gram as well, so you can find out the moles from it, right? So अभी अगर आपके पास concentration के साथ volume given होता तो moles आप निकाल सकते थे तब, right? लेकिन volume नहीं given, तो आप concentration वाला formula तो नहीं लगा सकते. तो अभी आप कौन सा formula लगा सकते हो? mass वाला लगा सकते हो. The formula is mass over mr is equals to moles, right? तो mass कितना है हमारे पास? 0.170 और किसका है भाई? H2S का. तो it is 1 into 2 plus 32 will give you 34. तो अगर मैं इसको 34 से डिवाइड कराऊं तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे. कितने मोल्स आ रहे हैं बच्चों? 1/200. 0.005. 0.005. ये हो गया आपके पास मोल्स, और ये मोल्स हैं आपके पास किसके? H2S के. Now you need to find out the moles of what? KOH, क्योंकि उसी की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास मौजूद है तो उसी का वॉल्यूम चाहिए. तो रिलेशन लगाना पड़ेगा H2S versus KOH, right? And you can see this according to the equation, it is 1:2. So if you have 0.005 of this, तो KOH कितना चाहिए होगा? मोल्स बताइए बच्चों, डबल हो जाएंगे इसके. So it must be 0.01. 0.01 moles of KOH. Now we have moles. So if you know the formula of concentration, या वो वाला formula जो आपके पास होता है, अगर आपको वो याद हो, कौन सा वाला formula था हमारे पास? Formula था moles is equals to concentration into volume over 1000. अगर volume जी, sir. सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो. So moles already we have 0.01. 1000 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बच्चों. concentration यहाँ की क्या हो जाएगी? डिवाइड 0.150. So we will have the volume in centimeter cube. कितना आया बच्चों? 66.66. 66.66. ये आया है. जी. सही है, तो लिख लेते हैं हमारा आंसर क्या है? 66.66 सेंटीमीटर क्यूब. इज इट राइट एवरी वन ऑफ यू? यही आया सबका? Yes, sir. So bachcho, we know that if you want to find out the volume, or you can see this, the concentration is given to you and the mass is given to you. So you can find out the moles from this, right? So moles is equals to mass over mr. The mass is 3.2 and the mr is 40. So how many moles we have right now? 0.8 मेरे ख्याल से. 0.08. 0.08. All right. So now we know the formula. Moles is equals to concentration into volume, and if you want to find out volume in centimeter cube, so it must be divided by 1000, right? So moles we know that 0.08, 1000 is constant, concentration we know that it is 0.1. So we can find out the volume in centimeter cube. जरा बताइए कितना आ रहा है बच्चों? 800. 800 centimeter cube. Mashallah, good job. So the question is over here, but so the question is saying magnesium chloride is present in seawater. Concentration is 1.26 gram per decimeter cube. Calculate the concentration of chloride ions in mole per decimeter cube, right? And arising from the magnesium chloride in seawater. So what you need to do, you need to find out the concentration of chlorides in seawater. Right, so we can solve this. Let's try a magnesium chloride and the concentration of chloride. All right, so how can we solve this? Just look at over here. This is a little bit difficult, maybe. So just find out the concentration of magnesium chloride first. So you can see this. This is already given to us 1.26 grams, right? This grams are actually per decimeter cube. इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में इतना ग्राम है, but ग्राम तो फिर भी है ना. We can find out the mole per decimeter cube by dividing molecular mass. If you divide by molecular mass, we can find out the mole per decimeter cube. So let's see, 1.26 gram per decimeter cube divided by the molecular mass of magnesium chloride. It is 71 plus 24 will give you 95. So what would be the concentration? Let me know. 0.013. 0.013. Now, so this is what? Mole per decimeter cube. This is what? Mole per decimeter cube, but this is a concentration of what? Concentration of magnesium chloride, right or not? This. This is the concentration of magnesium chloride. Now you can see this. If you talk about magnesium chloride, so in each molecule of magnesium chloride, you have 2 chlorides, bacho. So if you have 0.01 mole per decimeter cube of
magnesium chloride. So in it, you must have 0.026 double. क्योंकि एक में दो हैं तो जाहिर सी बात है कि डबल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन होगी क्लोराइड्स की, तो इट मस्ट बी 0.026 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. राइट बच्चों और नॉट? सर कैन यू रिपीट, समझ नहीं आया. देखो हाँ. देखो आप ऐसे कर लो ना, जो मैंने जो कराया है इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको ऐसे करा देता हूँ जैसे हम लोग को रिलेशन लगाना आता है ना, हम वैसे लगाते हैं. Now you can see this. If you talk about magnesium chloride, so this is one molecule. For suppose ना magnesium chloride का एक मोल है ये, तो एक मोल में कितने क्लोरीन है देखो, दो क्लोराइड है ना. 2 chloride. So can I write like this? Each magnesium chloride contains 2 chloride ions, right or not? यस. So if you have 0.013, तो उसमें क्लोराइड्स कितने होंगे x. So if you cross multiply that, so you will see this कि आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन है. सही है? सही सर. The double of, you can say that magnesium chloride. If you talk about the concentration of only chloride. The same situation we have in part B as well. The concentration of sulfate ions in seawater is 1.24 grams. Excess aqueous barium chloride is added. Calculate the mass of barium sulfate formed. All right. So you can see this. This is the concentration of what? Sulfate ions. First of all, we need to convert it into the decimeter cube. Then we need to multiply the volume to get the number of moles. And then we can find out the moles of barium sulfate and the mass of barium sulfate. So first of all, we need to convert it into the mole per decimeter cube. So we will have the concentration. So Isn't that the concentration of sulfate ions though? yes, this is a concentration of sulfate ions. So first of all, I need to divide it by the MR of sulfate. So I get the concentration of sulfate ion in mole per decimeter, right? Sulfate ion is actually SO4 2 minus. So what is the MR of this? 32 plus 16 into 4, 64. 64 plus 32 will be 96. बताओ बच्चों जल्दी से, what is the concentration you will have in mole per decimeter cube? Yes. What is the answer of this बच्चों? 0.012. 0.013. 0.013. 13 or 12? 3. sir. 13. 0.013 is, now this is the concentration in mole per decimeter cube, right? We can find out the moles of sulfate now easily. SO4 2 minus, because we have concentration, we have volume, and it is in centimeter cube, so we can divide it by 1000 as well, right? So concentration is 0.013, volume is 50 over 1000. बताइए कितने moles आए? Number of moles of sulfate. Six 6.5 into 10 to the power minus 4. 6.5 10 raised to the power minus 4. Right, बच्चों or not? जी सर. Yeah. Now just question में concentration दी गई है. How is that different from the concentration we found out? दोनों में क्या मतलब? देखो एक में आपको मास दिया हुआ है और आप एक में मोल्स निकाल रहे हो. This is the only difference. And sir, why are we using the volume of barium chloride? Where is the volume of barium chloride? It says barium. excess barium chloride is added. Oh, never mind. Sorry. अच्छा उन्होंने उसका बताया ना, सी वाटर का ही बताया ना. Ah, yeah. So I thought it was of barium chloride. All right. So now, bachcho, we have what? Moles of sulfates almost in the seawater, in the 50 centimeter cube of seawater. Now you can see this. One more thing. You can see this, that if you talk about sulfate ions, which is 1 right now, and if you talk about the barium sulfate, they both are having the same relation, right? Right? So whenever you have the same relation, it means whatever the moles of sulfate you have, the same moles of barium sulfate would be produced as well, right or not? Ji, sir. It means Yes. this is the amount of moles of barium sulfate that would be produced. Now you can easily find out mass. Mass can be found out by moles into Mole times MR, MR. and we have 6.5 10 raised to the power of minus 4 moles, and the MR of barium sulfate will be कितना होगा? Check करो, मेरे ख्याल से it should be 233. Check कर लो फिर भी एक बार, and then calculate the mass as well. Or if you want to remember this formula, so you can even remember this in this way, that mass is actually what? This is Mr. Mole. So you can even remember this formula by this trick.
mass is actually Mr. Mole, right? 0.15. 0.15 grams. All right, everyone, is that clear? किसी को कोई मसला है तो मुझे Yes, बताइए. Divide by 1000 होगा. Now just look at over here बच्चों, आपके पास सल्फामिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, वो रिएक्ट कर रहा है आपके पास NaNO2 के साथ, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.150 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaNO2, तो इसके मोल्स निकलेंगे पहले, फिर मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब निकालना है नाइट्रोजन का, ठीक है. So let's try this. So moles का फॉर्मूला हो गया आपके पास concentration into volume in centimeter cube over 1000. ये मोल्स आप निकल जाएंगे इस तरह से. Concentration कितनी है भाई? 0.15. वॉल्यूम है 20 over 1000. तो बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं बच्चों? 3 times 10 to the power of negative 3. 0.003 0. हाँ वो भी हो सकता है. 003 0.003. 003. चलो 0.003 मोल्स आ गए किसके बच्चों? ये मोल्स आ गए NaNO2 के. Now you can see this, they have the same relation, है ना, नाइट्रोजन और इसका रिलेशन सेम है, तो यही मोल्स नाइट्रोजन के भी होंगे. सही है. अब आप जी क्या सर. निकाल सकते हो? डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल सकते हो. डेसीमीटर क्यूब में Into निकालना है 24 तो कर ले. जस्ट मल्टीप्लाई बाय 24. एब्सोल्युटली राइट. तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 0.072. 0.72. decimeter cube, right? Let's see. जी सर. For suppose right now you have concentration and volume as well, so we can find out the moles easily. Moles is actually 0.15 into 25 over 1000. कितने moles आए बच्चों? 3 upon 800 3 upon 800. 800. 3.75 10 to the power minus 3. 3.75 10 raised to the power हाँ वो सही है. minus 3. Yeah. सही है. And you can see there's a moles of ammonium nitride and nitrogen is same, so we need to multiply it with 24 to get the number of, to get the volume in decimeter cube. जी बताइए कितना आया? 0.09. 0.09. 0.09. Absolutely right. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मामला हमने यहाँ तय कर दिया है मोल्स का, और ऑलमोस्ट मोल्स हमारे पास यहाँ पर फिनिश हो गया है.